Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. So I'm back with another lecture today. Today's lecture will be on transport of ovum and sperm and the process of fertilization. Right? So it is actually the lecture of embryology. In this lecture, we will be discussing the transport of ovum from ovary to the uterine tubes and then into the uterus. You'll be knowing the factors affecting the transport of ovum. We'll properly define what fertilization is, what is the normal site of fertilization, what are the results of fertilization, the factors affecting it, and the changes that occur in spermatozoa before fertilization, and what are the factors affecting its penetration into the ova, the layers of ova, right? So let's start with the lecture. In this picture we can see that when the ova, the female egg, is matured, it is having the cavity inside. Here we can see this is the cavity known as antrum, and then it is lined by the layers of cells, right? The outer layer is known as corona radiata and the inner one is known as zona pellucida. So the sperm has to penetrate these two layers in order to fuse with the nucleus of female egg, right? So in other words, we can say that for fertilization, what is fertilization? It is actually the fusion of male and female gamete, right? So now the fusion of these nuclei will happen only when the sperm will enter into the female egg. So for the entrance, for the penetration into the egg, the sperm has to cross these two layers, these two, right? The corona radiata and the zona pellucida. Okay, let's talk about the release of ovum from ovary first, and then we'll proceed to other points. So at the time of ovulation, ovulation is the time which you have already studied in the menstrual cycles, right? Ovulation happens in the mid cycle when the ovary discharges the mature ova from its surface, right? So at the time of ovulation, what happens? The fimbriated end of uterine tube, this is the uterine tube. Here, see the cursor please. This is the whole uterine tube. It is the ovary, right? So uterine tube, the parts we have already discussed. This is the fimbrial end, right? The finger like projections, if you remember. So the fimbriated end of uterine tube is near to the ovary, and that day we have already discussed the function of the fimbriae. That fimbriae, it catches the ova from the ovary at the time of ovulation. So this is the period of ovulation. Ova is released from ovary. See, this is the released ova, and then these the fimbriae of the uterine tube will catch this ova inside. Now what will happen, that this fimbriae, it has the cilia inside. It has the lining epithelium with cilia on the top, the cell surface modifications, right? Because of these cilia, the flithering movements of this cilia, the sweeping action will occur. Sweep karega ova ko into the uterine tube cavity, right? तो उसकी स्वीपिंग एक्शन से एक करंट वेव्स का करंट प्रोड्यूस होगा विच विल टेक इनसाइड द ओवा फ्रॉम द कैविटी जो हमारी पेरिटोनियल कैविटी में है इनटू द फिम्ब्रियल एंड, एंड इट विल टेक इट इनसाइड इट्स कैविटी, राइट? From the fimbrial end, the ova, the secondary oocyte, will travel into the infundibulum part, right? This is the infundibulum part. The oocyte, the secondary oocyte will come from the ovary, captured by the fimbrial end of uterine tube, and then it will be taken up to the infundibulum part, right? The expanded portion is the infundibulum part.
when the ova is released from the ovary. Okay, let's see the picture first here. See, the ova has been released. Now this is the remaining tissue of the mature Graafian follicle. So this was the whole follicle. It got ruptured. The ova was released, and then this remaining tissue will now regress, and it will form corpus luteum. This is known as corpus luteum, the remnant tissue of the Graafian follicle, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल. ओवा अब बाहर चला गया और ये अब हमारे पास रेमिनेंट टिश्यू है ऑन द सर्फेस ऑफ ओवरी, विच इज़ नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम. If pregnancy occurs, it will turn into corpus luteum of pregnancy. If pregnancy does not occur, then it will be termed as corpus luteum of menstrual cycle. Simple, it will be called as corpus luteum, right? It is another view, a very fantastic view actually. This is ovary. This whole region is of ovary. These are the fimri, the fimbrial end of fallopian tubes, and this is the ova. This is how the fimbrial end is catching the ova and taking it inside its cavity. See, this is the very nice picture. So that was about the transportation of ova, right? In the transportation of sperm, what happens, the sperm are stored in epididymis. Through epididymis they are taken via ductus deferens. See, these near the testes are the epididymis. From the epididymis, vas deferens is there, the ductal system, and these vas deferens will carry the sperms up to the urethra. See the cursor, I'm tracing it. This ductus deferens or vas deferens will take the sperms, and they will uh, traverse the whole course and enter into the urethra, right? And from the urethra it will be expelled to the exterior. So it is the sperms are deposited near the external os. This is the region of uterus shown in this picture. Here we can see the external os, and this is the internal os. Remember, we studied these parts in the lecture of female reproductive organs. So when the sperms are deposited near external os over here, they pass slowly to the cervical canal. The cavity of cervix is known as cervical canal. So they start passing upwards towards the cavity, and here we can see these sperms, these white structures, small tadpole like are sperms, right? They start proceeding upwards from the external os into the cervical canal, then into the uterine cavity. The speed is about 2 to 3 millimeter per minute, and they take almost 45 minutes to complete the whole journey to reach up to the uterine tube here, to reach up to this part. Only 200 sperms can reach to the fertilization site. Acha, here I want to mention one thing. Normally my slides are not this much overloaded, this much busy slides, right? But because here we are having the online sessions, so in the class I used to make you write the things which are important. Here, from here I cannot make you write all those things, so that is the reason I have written everything on the slide, so that it becomes easy for you people to memorize and keep studying it again and again, right? Fine. So where were we? We were on the last point, right? So only 200 sperms they reach to the fertilization site. Now that ova, the ova travels within the fallopian tube. Again, back to ova. The ova travels within the fallopian tube with the cilia of tall columnar epithelium of mucosa.
So the epithelium is tall columnar cells. It has a cilia on its top. That cilia is causing the flithering movements, sweeping the ova more inside of the uterine tube, right? Now the ova has reached to the dilated part of tube, which is ampulla. Ampulla is a dilated part of tube. वहाँ पे जाके ओवा अब reside करेगा, where it can stay from 24 to 48 hours, means it can stay up to there for 2 days maximum. And this is the place where fertilization takes place normally, right? So now I repeat, the ova, from the mature graphene follicle, the follicle ruptured, ova was captured by the femoral end of uterine tubes. Because of the presence of cilia on the epithelium of the uterine tube, the flithering movements, they caused the sweeping action. Ova was moved deep inside up to the region of ampulla. Ampulla may it will stay up to 24 to 48 hours. And from that their side, from outside, sperms, they were accumulated at the region of external os. From there the sperms started standing up into the cervical canal, into the uterine cavity, and then into the uterine tube. See, follow the cursor, from the external os into the cervical canal, into the uterine cavity, and then into the uterine tube, right? Now only 200 sperms can reach up to this region, and then they will also go up to the region of ampulla. Here is the point where fertilization will take place. Spermatozoa are not able to fertilize the oocyte immediately upon arrival in the female genital tract, because obviously there must be something happening in between. उसकी रिकंडीशनिंग की ज़रूरत है, कुछ ऐसा होगा, उसके बाद जाके it will fertilize the egg. अदरवाइज अगर ऐसे ही जाके फर्टिलाइजेशन होने लगे तो इतने सारे स्पर्म्स वहाँ 200 स्पर्म्स पहुँच चुके हैं, तो 200 स्पर्म्स तो फर्टिलाइज नहीं करेंगे, राइट? सो there are two reactions taking place. The first is the capacitation, the second is the acrosome reaction, right? These are important, definitions are asked for these. What is the reaction of capacitation, what is acrosome reaction? So these two reactions are important in order for a sperm to fertilize an egg, a female egg, right? Now we'll discuss what capacitation is. कैपेसिटेशन में क्या होगा? कैपेसिटेशन में आप जब स्पर्म को देखेंगे, उसके ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन कोट होता है, उसके ऊपर सेमाइनल प्रोटीन्स होते हैं, राइट? नाउ दैट sperm which wants, which is actually going to fertilize the egg, it has to get its own glycoprotein coat and seminal proteins to get diminished, to get destroyed, right? So what happens in capacitation, that glycoprotein coat and seminal proteins are removed from its surface, from the acrosome which is the cap of sperm, ठीक है? वहाँ से ये दोनों ग्लाइकोप्रोटीन कोड एंड प्रोटीन्स, सेमाइनल प्रोटीन्स, ये सारे हट जाएंगे. हटने के बाद क्या हो जाएगा? अब वो स्पर्म और एक्टिव हो जाएगा. कोई मोर्फोलॉजिकल चेंजेस नहीं आए हैं, खाली कोट हटा है, ठीक है? खाली ग्लाइकोप्रोटीन कोट हटा है ऊपर से. सो स्ट्रक्चरली इट इज़ सेम एज बिफोर, वैसे ही पूरा स्पर्म है, बट इट इज़ नाउ मोर एक्टिव. उसका ग्लाइकोप्रोटीन कोट हट गया है, ठीक है? नाउ दिस कैपेसिटेशन ये कहाँ हो रही होगी? कैपेसिटेशन हो रही होगी व्हेन द स्पर्म इज एक्चुअली ट्रेवलिंग फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी इनटू द यूट्राइन ट्यूब कैविटी. जब वो एक्सटर्नल ऑस से एंटर हो गया, सर्वाइकल कैनाल से एंटर हो गया, अब पूरा रास्ता वो जो चलता हुआ आया है फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी इनटू द ओविडक्ट्स और यूट्राइन ट्यूब कैविटी, वहाँ एम्पुला तक आने तक उसकी कैपेसिटेशन हो चुकी होती है,
राइट। और इस कैपेसिटेशन को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं काफ़ी सारी सब्सटेंसेस जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उस टाइम पे, ठीक है। द एनवायरनमेंट, द पीएच, द प्रोटीन्स, एंजाइम्स, एवरीथिंग, राइट। जब तक कैपेसिटेशन नहीं होगी एक्रोसोम रिएक्शन नहीं होगा, एंड देन जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी. So for fertilization, these both reactions are important, and for acrosome reaction, capacitation has to occur. So for capacitation कितना टाइम पीरियड लगता है? 5 to 7 hours हमें स्पर्म को लगेंगे, 5 to 7 hours कैपेसिटेट होने में. और ये कैपेसिटेशन हो रही होती है when it is moving through the uterine cavity and reaching into the ampulla of the uterine tube. Right, यहाँ पे we can see in the above picture many sperms are around a single egg, a female egg, ठीक है. अब इसमें से एक की कैपेसिटेशन होगी, वो कैपेसिटेशन होके उसका ये ऊपर से ग्लाइकोप्रोटीन कोट एंड प्रोटीन्स रिमूव होंगे, एंड देन इट विल बी एबल टू ग्रो और टू पेनिट्रेट डीप इनसाइड द लेयर्स ऑफ ओवा, ठीक है. देखो दिस इज फेज 1, फेज 2 में यू कैन सी दैट इट इज एंटरिंग इनसाइड, ठीक है. तो यहाँ पे ये कैपेसिटेशन नहीं, दिस इज एक्रोसोम रिएक्शन, अभी बताती हूँ, राइट. सो दिस इज कैपेसिटेशन कि वो एक्टिव हो गया है, ऊपर से ग्लाइकोप्रोटीन कोट हट गया है. Now acrosome reaction, it occurs when sperms come in contact with corona radiata of the oocyte. Corona radiata बाहर वाले cells, उसके बाद अंदर वाले cells zona pellucida. Here we can see in this picture, नीचे B में देखो ये बाहर वाले cells corona radiata है. The red layer is showing the zona pellucida, right. Sorry. Okay. So it occurs when the sperm comes into contact with corona radiata of the oocyte. Perforations develop in the acrosome. अब acrosome जो उसका head है उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन कोड जा चुका था, अब head में perforations आनी स्टार्ट हो जाएंगी. यहाँ पे perforations आनी स्टार्ट हो जाएंगी. Point fusions of the sperm plasma membrane and external acrosomal membrane occur, means यहाँ पे इसके हेड पे जो membranes हैं वो आपस में फ्यूज़ होना शुरू हो जाएंगी, वो membrane अब disappear होना स्टार्ट हो जाएगी, and this acrosome reaction is associated with the release of acrosome enzymes that facilitates the process of acrosome reaction and thus fertilization, राइट. तो ये एक्रोसोम एंजाइम्स कर रहे होंगे, एक्रोसोम एंजाइम्स रिलीज होंगे, वो इसके हेड के जो मेम्ब्रेन्स हैं उनमें परफोरेशंस ला के उसको डिसइंटीग्रेट करेंगे, सो दैट नाउ इट बिकम्स ईजी फॉर स्पर्म टू एंटर इनटू द लेयर्स ऑफ एग ऑफ ओवा. Now, because the capacitation and acrosome reaction has taken place, now fertilization will occur. How will you define fertilization now? It is the process by which male and female gametes fuse together. Right? Where does it occur? It occurs in the ampullary region of uterine tube. Important. So here we can see the ova has been discharged from the ovary, taken up to the ampullary region, and then here we can see the sperms are here fertilizing the egg. Zygote has been made और ये zygote travel होते होते uterine cavity में जाके implant हो गया है, embed हो गया है, right? So this is the egg. In another picture we can see the egg with the multiple sperms attacking its walls, and only that sperm can enter, which goes through the process of capacitation and acrosome reaction. Here in this picture, let's repeat the parts. Fimbriae,
जो कैच करेंगे ओवा को, उसके पीछे एक्सपेंडेड पोर्शन इज इनफंडिबुलम एंड देन कम्स द एम्पुला जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, राइट. सो दिस इज द एम्पुलरी रीजन. The genetic material from haploid sperm and haploid secondary egg of mother merges into a single diploid zygote. So this is the result of fertilization. You can even put this in definition of fertilization, that the process by which in which the process in which the fusion of male and female gametes take place, resulting in a single diploid zygote, is known as fertilization, right. So here we can see the process of fertilization and both reactions occurring here. This is the capacitation में उसका ग्लाइकोप्रोटीन कोट एंड सेमाइनल प्रोटीन्स चले जाएंगे. उसके बाद इसके यहाँ एक्रोजोम विच इज़ द हेड ऑफ स्पर्म, एक्रोजोम के लेयर्स में परफोरेशंस आनी स्टार्ट हो जाएंगी और वो पूरी डिसेमिनेट हो जाएगी एंड देन द मटेरियल ऑफ हेड ऑफ स्पर्म इज पोर्ड इन डीप इनसाइड द egg, right. So this is the acrosome reaction. The first one is the capacitation and these are the acrosome reactions taking place. Let me use the mouse. It is not working properly. Okay, right. So right, and this blue layer is showing zona pellucida and the outer cells are corona radiata, right. Now we'll discuss the stages of fertilization. For the stages of fertilization, in stage 1, what happens? The passage of sperm is taking place through corona radiata, depends on the enzyme action. Corona radiata में पेनिट्रेट कर रहे हैं तो इसमें हमें कौन से एंजाइम्स नीडेड होंगे? हाइलुरोनिडेज रिलीज फ्रॉम स्पर्म एक्रोसोम एंड ट्यूबल म्यूकोजल एंजाइम्स. ट्यूबल म्यूकोजल जो यूट्राइन ट्यूब के म्यूकोजा से रिलीज हो रहे हैं एंड हाइलुरोनिडेज एंजाइम्स जो स्पर्म के एक्रोसोम से रिलीज हो रहे हैं, राइट. द फ्लैजुला एक्शन ऑल्सो एड्स कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेशन. फ्लैजुला ऑफ स्पर्म. So here we can see the ova and multiple sperms over here. From this photograph, it should be clear that the heads of human sperm are less than 1/20th the diameter of human egg. You can see it has small heads, the sperm, and this is actually the human egg, female egg, right? The arrows are actually pointing on the heads of the sperm. So stage 1 is actually penetration of corona radiata. Stage 2 is penetration of zona pellucida. Acrosomal enzymes यूज होंगे इसमें, esterases, acrosin and neuraminidase, which causes the lysis of zona pellucida. ठीक है. The lysis of zona pellucida is known as zona reaction. जब जोना पेलोसिडा को पेनिट्रेट करके स्पर्म अंदर एंटर हो रहा है, इसको हम कहेंगे जोना रिएक्शन. नाउ देयर आर 3 रिएक्शंस. आपको कैपेसिटेशन पता होना चाहिए. जब उसका ग्लाइकोप्रोटीन कोड जा रहा है, वो एक्टिव हो रहा है एंड इट इज़ नाउ प्रिपेयर्ड फॉर पेनिट्रेशन इनटू द एग. सेकेंड इज एक्रोसोम रिएक्शन, जिसके अंदर उसकी हेड की मेम्ब्रेन्स जा रहे हैं, राइट. थर्ड इज़ द जोना रिएक्शन, जो अब वो जोना पेलोसिडा को पेयर्स करने के लिए एंजाइम्स उसको जोना पेलोसिडा को ईट अप करेंगे, ठीक है. सो दिस रिएक्शन मेक्स जोना पेलोसिडा इम्परमिएबल टू अदर स्पर्म्स. जब जोना रिएक्शन हो गया, वो वाला स्पर्म अब अंदर एंटर होने वाला है, हो चुका है. अब बाकी दूसरे स्पर्म्स दे आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द एग, क्योंकि एक विनर हो चुका है एंड दैट हैज़ एंटर्ड इनटू द एग.
When more than one sperm manages to enter the ovum, then the condition occurs known as dispermy और ट्राइप्लॉइडी. अगर दो स्पर्म्स गए हैं दैट इज डायस्पर्मी, तीन स्पर्म्स चले गए तो हो जाएगी ट्राइप्लॉइडी. ये हमारे पास फिर ये एबनॉर्मल जाइगोट बनाएगी. ठीक है. एंड नॉर्मली दीज zygotes they are normally aborted in the first trimester, right? So this was stage 2. Stage 1 was penetration of corona radiata. Stage 2 was penetration of zona pellucida. Again here in this picture we can see this is the conditioning. At this level conditioning of the sperm will take place, and then the pores in the head wall will start appearing. ये हमारा एक्रोसोम रिएक्शन हो जाएगा. एक्रोसोम रिएक्शन सही है. यहाँ पे आके अब ये जोना पेलुसिडा में एंटर होना शुरू कर रहा है, उसको पियर्स कर रहा है. यहाँ पे ये हमारा जोना रिएक्शन होगा. ठीक है. Now when the zonal reaction has taken place, what happens, यहाँ पे इसमें ओवा में अंदर cortical granules बनना start हो जाएंगे. These are the cortical granules. ये cortical granules will now form the wall which will be forming a barrier for other sperms to not to enter inside the egg. ठीक है बेटा. मीन्स यहाँ से जब इसने एक्रोसोम रिएक्शन के बाद जब जोना रिएक्शन हो गया, ये मटेरियल अपना अंदर पोर डाउन करने लग गया, ये सब जा रहे हैं अंदर. यहाँ पे अब इसकी बाकी वॉल्स पे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स आ जाएंगे ताकि दूसरी तरफ से कोई भी स्पर्म अंदर एंटर ना हो सके. Stage 3 is fusion of plasma membranes of oocyte and sperm. Now because the head membrane of sperm has disintegrated, ठीक है, उसका मटेरियल पूरा अब सामने रखा हुआ है. एंड यहाँ पे oocyte की एक मेम्ब्रेन है. अब वहाँ से भी समझो ये वाली मेम्ब्रेन भी चली जाएगी. दोनों मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज़ होकर ख़त्म हो जाएगी. So the head and tail of a sperm enter the cytoplasm of the oocyte, but the sperm plasma membrane remains behind. सारा content sperm का it will be poured deep inside into the ova. उसकी जो बाहर की एक मेम्ब्रेन है वो खाली पीछे रह जाएगी. राइट. उसके साथ ऑर्गेनल्स भी रह जाते हैं. ठीक है. इधर सेकेंड वाली पिक्चर में देखो जो इसको मैग्नीफाई की हुई है. ठीक है. यहाँ पे इसकी हो रही होगी कैपेसिटेशन. ये रेडी हो रहा है जाने को. हेड की एक्रोसोम की वॉल्स में पोर्स आने शुरू हो गए. कोरोना रेडिएटा को ये पियर्स करना शुरू कर रहे हैं. यहाँ पे आके हमारा एक्रोसोम रिएक्शन स्टार्ट हो गया. एंड वंस इट इज़ एंट्रिंग इनटू द जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा में जोना रिएक्शन होगा. ठीक है. जोना रिएक्शन होगा. उसके बाद यहाँ पे इसकी मेम्ब्रेन्स एंड ओवा की मेम्ब्रेन्स फ्यूज़ होंगी. जब इसकी स्पर्म की और ओवा की मेम्ब्रेन फ्यूज़ हो गई, यहाँ पे एक हमारे पास गैप आ गया. एंड देन द होल मटेरियल ऑफ द स्पर्म विल बी ट्रांसफर्ड इनसाइड इनटू द ओवा. The stage 4 of fertilization, in this second meiotic division of oocyte will be completed. Right. Now get back to the cycles which we discussed earlier. The cycle of meiosis, उसमें we studied that the secondary oocyte was arrested in metaphase of meiosis 2. Yes. Right. अब उसकी जो वो अरेस्टेड फेज में था, नाउ फर्टिलाइजेशन हैज़ टेकन प्लेस. अब उसकी डिविजन कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है. नाउ इट विल फॉर्म द मेच्योर ओवा एंड द पोलर बॉडी लाइक दिस. ठीक है. इस तरह से अब फर्टिलाइजेशन हो गई है. अब ये अपना मेटाफेज से आगे स्टार्ट करेगा एंड इट विल कंप्लीट इट्स डिविजन. See, and here we can see the second polar body. Now it's your task
क्लास में होते तो मैं आपसे फ़ौरन पूछती। अभी आप बुक्स खोलें और आप अपना चेकआउट करें कि व्हाट्स द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी एंड व्हाट इज़ सेकेंड पोलर बॉडी, राइट? Now coming to stage 5 of fertilization. Now in stage 5, formation of male and female pronuclei. Pronuclei कैसे बन रहे हैं? The chromosomal material of sperm and ova, it will decondense and it will enlarge. ठीक है, तो अब ये प्रोन्यूक्लियाई इनका नाम हो जाएगा. तो दिस विल हैपन इन स्टेज 5 ऑफ फर्टिलाइजेशन. Now these pronuclei will fuse together to form a proper fused pronucleus और ये अब हमारे पास डिप्लॉयड हो जाएगा. ठीक है, here we can see the two nuclei, pronuclei fusion हो रही है इनकी, right? And here the arrow shows the second polar body. The plasma membranes of the two pronuclei are dissolving and one diploid nucleus will remain visible. Means this, which I have already showed you in the start of this slide. In stage 6 of fertilization, membranes of the pronuclei will break down, chromosomes condenses and arrange themselves for mitotic cell division. राइट, मियोसिस उसने अपनी पूरी कर ली. अब यहाँ पे माइटोसिस होगा और माइटोसिस का एंड रिजल्ट क्या होता है? माइटोसिस का हमेशा डिप्लॉयड डॉटर सेल्स ही मिलती हैं, राइट? सो ऑन मेम्ब्रेन डिसोल्यूशन देयर इज वन सेल विथ 46 क्रोमोसोम्स जिसका नंबर होगा डिप्लॉयड. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी डिप्लॉयड, दैट इज 2n, right? The first cleavage will be followed shortly, leaving two cells each with 46 chromosomes, because what happens in mitosis, हमें end result 2 diploid daughter cells मिलती हैं, right? So mitosis in the new zygote uses centrioles derived from sperm. The oocyte has no centrioles. It is important and sometimes asked in auspice. This is the important point, right? कि centrioles derive हो रहे हैं हमारे पास sperm से, because oocyte के अपने centrioles नहीं. Now let's talk about few facts regarding fertilization. That it gets completed within 24 hours of ovulation, and approximately 400 to 600 million sperms are deposited at the cervical opening, which where we studied in the early slides. The region is external os, राइट? सो एक्सटर्नल ऑस पे जाके डिपॉजिट होंगे और पर इजैकुलेशन इट इज़ 400 to 600 मिलियन स्पर्म्स, राइट? Some sperms are held up by the folds of cervix and are gradually released into the cervical canal. This gradual release increases the chance of fertilization. Most human sperms do not survive longer than 48 hours. Important. Viability of gametes पूछते हैं, ठीक है? ओके, आउट ऑफ दीज 400 to 600 मिलियन स्पर्म्स, ओनली 200 स्पर्म्स विल रीच द फर्टिलाइजेशन साइट. मोस्टली बीच रास्ते में ही डिजेनरेट कर जाएंगे, कुछ जो है एब्जॉर्ब हो जाएंगे बाय द फीमेल जेनेटिक ट्रैक इटसेल्फ, राइट? किसी की मोटिलिटी कम रह जाएगी, पीछे रह जाएंगे, सही है? सो ओनली few of them will reach into the ampullary region, and out of those only one will be able to fertilize the egg. दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द वाइबिलिटी ऑफ गैमेट्स, ये MCQs में बेटा बहुत आता है, तो यू शुड राइट इट समवेयर इन योर नोट्स. द ओवा इज़ वाइबल फॉर 12 आवर्स. मैक्सिमम लाइफ उसकी होती है 24 आवर्स, राइट? स्पर्म कैन सर्वाइव फॉर 48 आवर्स and it can get trapped into the cervical mucosal folds, right? और फिर थोड़ा बाद में कैपेसिटेशन करके it might reach up to the ampullary region. And spermatozoa may remain viable in the female reproductive tract for several days, right? Spermatozoa can be viable for several days.
and sperms can survive for 48 hours. What is the difference? You have to find the difference of this, right? Obviously, next lecture may I won't be able to ask you, but you have to find it. Results of fertilization, it's a complete question itself. OSPI में बहुत आता है. The results of fertilization, it stimulates the secondary oocyte to complete meiosis, right? Meiosis 2 अपना पूरा डिवीजन कर रही है, पूरा कंप्लीट हो रही है ना डिवीजन आफ्टर फर्टिलाइजेशन. It restores the normal diploid number of chromosomes, right? Nothing ambiguous in this. It results in variation of human species as maternal and paternal chromosomes they get intermingled, right? Crossover आपने पढ़ा होगा meiosis में. The embryo contains only maternal mitochondria because the sperm mitochondria are dispersed into the egg cytoplasm and discarded. Important. It determines the sex of embryo. The sex chromosome Y or X, it is carried by the successful sperm. It will determine, by the help of this we can determine whether it's XX or XY. ठीक है? Because female egg it will provide an X and sperm it can provide an X or a Y. सही है. अगर X आ गया तो XX फीमेल गैमेट विल बी फॉर्म्ड. अगर Y आया स्पर्म के साथ तो हमारा मेल गैमेट बनेगा. Now let's summarize the process of fertilization quickly. It is a sequence of coordinated events जिसमें सबसे पहले passage of sperm हुआ through corona radiata, then it penetrated zona pellucida. उसके बाद fusion हुई plasma membranes of oocyte and sperm की. उसके बाद जब फ्यूजन हो गई कंप्लीट हुई सेकेंड meiotic division of female pronucleus, right? सेकेंड meiotic division हुई एंड देन फॉर्मेशन हुई फीमेल प्रोन्यूक्लियस की. उसके बाद फॉर्मेशन हुई मेल प्रोन्यूक्लियस की. उन दोनों की फ्यूजन हुई. फ्यूजन होके हमारे पास एक जाइगोट बन गया, डिप्लॉयड जाइगोट बन जाएगा. ओके हमने अक्सर ये ट्विंस देखे हैं हमारे कहीं ना कहीं फैमिलीज और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में होते हैं. So twins are of two types, monozygotic and dizygotic. Monozygotic में क्या होगा, एक एग है, ठीक है, एक ही स्पर्म आया, वो जाइगोट बना और वो जाइगोट it has now divided into two zygotes. Single egg with single sperm, fertilization has occurred, the zygote has been formed. ठीक है, वो एग अब स्प्लिट हो गया इंटू टू डेवलपिंग जाइगोट्स, राइट? फर्टिलाइज होने के बाद वो एग टू में टू जाइगोट्स में बन गया. ठीक है, इनको कहते हैं हम मोनोजाइगोटिक और ये वाले ट्विंस होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस. ठीक है, यूजली जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो सेम सेक्स के होते हैं. Dizygotic twins, dizygotic they result from the fertilization by two sperms. ठीक है, two sperms of two separate ova that have reached maturation at the same time. ये दो sperms होंगे, वो दो ova को करेंगे और वो बाय नेचर कभी ऐसा हो जाता है कि ओव्यूलेशन पे 2x ओव्यूलेट हो गए तो उन्होंने 2x को मेच्योर कर दिया तो हमारे पास डायजाइगोटिक हो जाते हैं. ये नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, इसमें सेक्सेस डिफरेंट हो सकती है. ठीक है, द इंसिडेंस ऑफ दिस डायजाइगोटिक प्रेगनेंसी इंक्रीजेस विद द एज ऑफ मदर. ओके नाउ ये अभी तक हमने सारी बात की थी नॉर्मल फर्टिलाइजेशन की. ठीक है, अब कुछ ऐसा हो सकता है कि हमारी नॉर्मल फर्टिलाइजेशन इट कैन गो अ बिट अवे फ्रॉम नॉर्मल, राइट? इट कैन गो टूवर्ड्स एबनॉर्मल, नॉट टोटली एबनॉर्मल बट नॉर्मल हमारी फर्टिलाइजेशन का समझो प्रोसेस नहीं हो रहा. तो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, राइट? या तो हमारे पास जो फर्टिलाइजेशन करने के लिए स्पर्म आया है
वो मोर देन वन होगा। जो दोनों टर्म्स हम पढ़ चुके हैं, डायस्पर्मी मीन्स दो स्पर्म्स आ गए, और ट्राइप्लॉइडी या थ्री स्पर्म्स आ गए, तो ऑब्वियसली द एंड रिजल्ट वुड नॉट बी नॉर्मल, राइट। तो ये वाले जो हमारे जाइगोट्स बनेंगे, दे विल लीड टू अर्ली अबॉर्शंस। Secondly, second option can be that the couple, one of them is infertile, जिसकी वजह से normal fertilization नहीं हो रही, right? So infertility can be one of the options in which normal fertilization is not happening. The third option can be bad timing. अब ये कौन सी टाइमिंग है? टाइमिंग ये कि अगर ओव्यूलेशन नहीं हुई भी है, उस टाइम पे स्पर्म आ गया, तो ऑब्वियसली उस स्पर्म को एग नहीं मिला, तो वो किसको फर्टिलाइज करेगा, राइट। इट कैन सर्वाइव अप टू 48 आवर्स। अगर उन 48 आवर्स में ओव्यूलेशन हो गई तो वेल एंड गुड, अदरवाइज द फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। For in vitro studies, the ovulated egg cannot be fertilized after 24 hours. इन विट्रो स्टडीज़ में जब ओव्यूलेटेड एग को हम देख रहे होते हैं, उसको फॉलो कर रहे होते हैं, तो विद इन 24 आवर्स ही उसको फर्टिलाइज करवाना होता है, अदरवाइज 24 आवर्स के बाद इट विल नॉट गेट fertilized, right? So these are the you can say options in infertility. Normally male infertility का reason हो सकता है insufficient number of sperms or poor motility, right? And in infertility of women, there can be various reasons, जिसमें few of them could be the occluded uterine tubes because of some diseases, the hostile cervical mucus which can provide the hostile environment and that might create damage to the sperms, immunity to spermatozoa, absence of ovulation. So in females there can be various reasons, but in males it's mainly dependent upon the number of sperms or the motility of sperms, right? Okay, now come to this in vitro fertilization. This term is used for embryo transfer. It is a process in which the transfer of either of the dividing zygotes or blastocysts is taking place into the uterus, and it is actually this process is used for those couples who are unable to conceive, who are infertile, right? In this picture we can see what's happening. See, in vitro fertilization, what happens, the egg, it is actually in correspondence with the days of the monthly cycles, the menstrual cycles. In the early days of cycle, the medicines are being given to stimulate the production of egg, proper ovulation उसकी करवाते हैं, right? एग की ग्रोथ को मॉनिटर कर रहे होते हैं थ्रू अल्ट्रासाउंड स्कैन्स। व्हेन इट इज़ नियर टू ओव्यूलेट, उसको नीडल से एस्पायरेट करके निकाल लेते हैं। इन विट्रो मीन्स उसको एक ग्लास स्लाइड पे पेट्री डिश में जाइगोट बनाते हैं। दे पुट द एग ओवर इट, द मेच्योर एग, वो उसमें यहाँ पे फिर स्पर्म के साथ द fertilization occurs, and then when the zygote has been formed, initial cleavage start हो गई up to 2 to 4 cell stage. Now this zygote will be uh, implanted deep inside the uterine cavity, and it will get embedded into the uterine bed, right? So this process is known as in vitro fertilization, which is used for those couples who are not conceiving normally. The reasons can be various, few of them have been already discussed, but that's not important for you people. You must need to know what this is, in vitro fertilization, what can be the chances for abnormal fertilization, and the main important focus should be on the stages of fertilization, the results of fertilization. That's it, right?
These are few contraceptive methods used in our society. They are barrier techniques, they are contraceptive pills, they are male pills also. And there is a medicine known as RU486 mifepristone, which causes abortion if it is administered within 8 weeks of previous um, menses. Then one of the other methods is IUDs. The full form of IUDs, intrauterine devices. And the other but surgical are vasectomy and tubal ligations. Vasectomy is for males and tubal ligation is for females, right? So you just need to know the names only for contraceptive methods. Rest, I have told you what is important in this lecture for from your exams point of view. I hope there are no queries. If you are finding any query, you can email me to doctor, that is dr dot sahrish sahrish at gmail.com. Then I'll reply to your queries, right? So, okay, thank you everyone.